Heidelberg. I was selected to work with Professor Andreas Just. Mhm. So the problem was the landlady asked me for 700 euros per month, which was kind of really very big amount just for a single room. And That who means when did that happen? so basically we had our results in February, who all are selected. And then the DART office New Delhi told us that you have to find your accommodation on your own. Mhm. So initially I had faced a lot of issues in just finding a room. And then I had some contact with other students who were selected just to kind of, share a room on sharing occupancy. But the landlady said it's 700 euros. So I was like, 350, it's fine. Two of us can manage. But unfortunately, that guy, he had another guy from his own institute, so he went with him. So I was unable to, because the fellowship was of like 930 euros per month. And if 700 euros is going just for, accommodation per month, I'm left with 230 euros. And I was reading, Okay, okay. how much is required for surviving in That means Germany. you dropped that plan. Yeah, I declined it. Yeah, I had to decline it. That's why I am doing it because in at University of Heidelberg, okay, that's Yeah. why community is necessary. Maybe you are not connected to Indian community. Yeah, the Indian No, diaspora there, actually, because I had, like Dr. The Anshuman, who has been with me since he's doing his PhD at Max Planck in Mhm, Galsing. So he had also got selected in the same university under the same professor, like mhm, in 2017. But that time he was saying that the accommodation was around, I think, 400 or max to max 500 euros. mhm. So now this additional hype of 200 euros, it didn't make any sense. Like you are giving me the kind of a small room to stay. Yeah, that means So this sample that depend upon the individual deal to individual deal. Simple case, I am living in Berlin, right? yeah, yeah, Berlin and Munich is the expensive city in Germany, yeah, 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 in the whole Germany, right? yeah, yeah. So I am paying 500 euro in the sharing only, okay? But Okay, that five. depends. Some people are also giving 350 in the sharing. Some people are also getting a room five means single room in 500. That Okay, depends, like deal to deal. okay. What I am trying to explain that आपको सही चैनल नहीं मिला जिसके थ्रू आप अकोमोडेशन सर्च कर पाओगे मे बी Maybe like like I had this like हम लोग सब एक साथ ही सब कुछ कर रहे थे like मेरे साथ और भी 9 बच्चे सिलेक्ट हुए थे टू गो टू जर्मनी एंड वर्क एज एन इंटर्न. बट बात है कि मेरा और एक मेरा बैचमेट है तो वो भी नहीं जा पाया बिकॉज उसको डॉटमंड में एकोमोडेशन ही नहीं मिला. वही दिक्कत तो वही तो दिक्कत उसका क्या है जो करेंटली जो स्टूडेंट है देख प्रॉब्लम जैसे हाँ, जैसे आ, अभी मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं राइट अच्छा, हाँ हाँ, जैसे मास्टर्स के मतलब लिए. सितंबर इनटेक इज द मेजर इनटेक फॉर बैचलर्स मास्टर्स फॉर पीएचडी एंड फॉर ओके. एवरी फील्ड ऑफ स्टडी एंड द रिसर्च हाँ, एवरीथिंग हाँ, तो वी कैन से अकोमोडेशन मिलना इंडिया से रहते हुए हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता है एग्जैक्टली, हाँ. अलग जब हम जर्मनी में आए तो हमें कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाता है वहाँ पे जब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है जैसे अच्छा, कि आप जब मतलब यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रुप है वहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलता है हाँ, हाँ, राइट देयर यू कैन गेट टेम्पोररी अकोमोडेशन ऑल्सो फॉर फाइव ओके. मंथ्स फॉर 4 मंथ्स तो हम्म, अकोमोडेशन लेना एक चैलेंज है हाँ, इट डेफिनेटली बिकॉज राइट नाउ जो क्राइसिस यूक्रेन रशिया वार हाँ, जो हाँ, इट्स वो वेरी सब चैलेंजिंग एक्सपेंसिव हो गया है, हाँ, उसकी वजह से. लेकिन फिर भी मतलब विद इन 500 euro या 400 euro you can get a sharing room easily any part of the Germany any ओके, part of the Germany it's completely but the thing is but it's not easy it depends upon the deal to deal हम्म, so you have to contact different so many students uh, until you find the place that is the only हम्म, mantra you can हम्म, say so because हम्म, when means you told me like you drop this plan because of accommodation that time I saw means that means still now students are facing big because जब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना हमें पता नहीं होता एक्चुअली प्रॉब्लम क्या अभी मतलब करेंटली क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है हाँ, like like इंडिया में क्या है ना, like you get things easily, like like या it's easy to survive, like थोड़ा सा पैसा कुछ ना कुछ you can manage somehow, you can have contact with people. But other यूरोप यूएस में वैसा नहीं चलता. I mean, it's difficult. yeah I can I understand mean, because you are yeah, in the underground you are
मतलब फर्स्ट टाइम मे बी यू आर प्लानिंग टू डू दिस थिंग्स, और मैं या यहाँ पे 3 साल हूँ, तो मुझे थोड़ा, मैं इसमें थोड़ा यूज टू हो गया हूँ। हाँ या हाँ। जैसे अभी सपोज अभी मैं डिफरेंट सिटी में जाऊंगा, राइट, जैसे लाइक मैंने अभी क्या हुआ था कि मैं इजिप्ट गया था अभी, तो हम्म लाइक फॉर 2 वीक्स, तो मुझे ट्रैवल ग्रांट मिला था टू गिव अ टॉक, जो अभी दो मेरे पेपर्स हैं उसके बाद में गामा दे बर्स्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए। सो दे उन्होंने मेरा एकोमोडेशन का कॉस्ट पूरा कवर कर लिया। लाइक हम्म मुझे एक 4 BHK का फ्लोर मिला था, उसमें लाइक विंडो, लाइक इट वाज काइंड ऑफ लाइक सूट जैसा, ड्राइंग room proper. And I was हम्म like, till that time I was regretting not going to Germany because of accommodation. But I was यस thinking यस यस like, yes, Egypt is not kind of a hyper like country like Europe, but still they were able to give me a nice place to live and in an expensive. So they have this New Cairo and Old Cairo in the capital. So still they were able to give me a nice place in the new city, and that was expensive also, but I didn't have to pay anything. हम्म तो लाइक उस टाइम तक मुझे रिग्रेट था कि मैं जर्मनी नहीं गया एंड ऑल, बट उसके बाद नहीं, लाइक आई मेड द राइट डिसीजन। तो बट लाइक ये चीजें अंडर ग्रेजुएट के साथ होती हो सकती है, बिकॉज लाइक मास्टर्स एंड PhD स्टूडेंट के साथ दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इज वेरी रेयर, लाइक रेयरली होता होगा, क्योंकि फुल्ली फंडेड होता है सब कुछ, एंड इट्स अ 2 years एंड PhD इज लाइक अ 5 year कमिटमेंट लाइक दैट। So universities take a lot of more, they are more careful about these things. If the student is coming for the masters or the PhD, so yeah, the यही मतलब like this is how the things go. नहीं, regarding the accommodation, actually for the masters the same thing. Regarding the accommodation, students need to take care of the accommodation. इंडिया में Okay, ऐसा क्या होता है, अच्छा, हॉस्टल आपको मिल जाएगा, ऐसा हाँ नहीं है। हॉस्टल मिल जाएगा, हाँ हाँ। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स है फॉर स्टूडेंट्स, ऑल्सो देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स इन द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, देयर यू अच्छा, कैन गेट द accommodation within 230 euro, 240 euro, but still there are so many students are trying, so you need to be stay in maybe in waiting list. या But apart from this, स्टूडेंट को मिल जाता है, क्योंकि ये हम्म, एक प्रोसेस है। सो या दैट मीन्स अकोमोडेशन एक्चुअली, जैसे मैं अभी रिकमेंड क्या करता हूँ मैं स्टूडेंट को, जैसे मेरे पास बहुत सारा कॉन्टेक्ट आता है इसके रिगार्डिंग। हाँ सिंपल जी जी, मैथमेटिक्स है, if you are not getting accommodation, don't think you will not get it. Okay, first you हाँ have to book the hotel or Airbnb. हाँ If you are not या getting it, हाँ stay एयरबीएनबी, there हाँ, for stay there for 30 days. Okay, यस 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 यस, during हाँ the 30 समझ days गया, you will get definitely something. मैंने जी जब जी इटली आया था, जी जी, मैं अभी right now I'm living in Germany, so when I was in Italy, okay, ओके, मुझे भी कोई accommodation पता नहीं था, तो मैंने simply booking.com में हॉस्टल बुक किया। अच्छा, ओके, जो हम्म, डोरमेटरी हॉस्टल्स होता है वो हाँ समथिंग पर डॉर्मेट्री, हाँ नाइट हाँ, 15 euro समथिंग था। अच्छा तो मैंने हॉस्टल 15 दिन रुका, मुझे अकोमोडेशन नहीं मिला। फिर से 15 दिन अच्छा, लगेज लेकर के दूसरे हॉस्टल में गया। हॉस्टल में एक प्रॉब्लम क्या होता है, आपको खाना भी होटल में खाना पड़ता है। नहीं तो फिर मैं हाँ थोड़ा वहां पे माइक्रोवेव था, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा कर, मतलब थोड़ा जैसा स्टूडेंट को मैनेज हाँ करना पड़ेगा हाँ, फाइनेंस। जी जी समझ रहा हूँ जी, लेकिन आफ्टर मे बी 1.5 months, देन हम्म, फाइनली आई गॉट ए रूम। तो ओके, सपोज मैं यही सोच के इंडिया में रह जाता, हम्म, तो चैलेंज होता है, लेकिन बिकॉज मैं एक रेगुलर कोर्स में आया था, तो आप एक लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम लाइक फॉर द एक सेमिस्टर और एक प्रपोजल के हाँ लिए आ रहे हो, तो देन इट इज डिफरेंट थिंग। हाँ हाँ, बट आई विल सजेस्ट यू नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग, डोंट अफ्रेड रिगार्डिंग accommodation because you will get it. या आई मीन Because हाँ there, yeah, you need to be there, but it little bit a trauma because accommodation नहीं होता, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। हाँ, वो एक चीज मतलब वो एक टेंशन जैसा बन जाता है, आई मीन दैट इज द यस मेजर यस थिंग यू नीड। यस आई मीन तो यस आप कोई भी जगह जाओ, यू नीड समवेयर टू लाइक बस एक बिस्तर चाहिए और एक टेबल चाहिए, काम, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू नीड इट, टेबल एंड यस चेयर, यस बेड। तो वही है कि आई मीन वी वर ट्राइंग टिल लास्ट मार्च तक, मैं ट्राई किया खींच खींच के, देन आई मीन आई रैन आउट ऑफ पेशेंस, आई वाज लाइक छोड़ो इसको। तो आपने तो डांस फेलोशिप छोड़ दिया? हाँ, डार्ट फेलोशिप मैंने छोड़ दिया।